Hello everyone, hope you're all having an amazing day. Today I'm going to review one of the most popular graphics card that was released back in 2016, and that is the GTX 1050. अगर आप लोग गेमिंग के शौकीन हैं या इवन सिंपल नॉलेज भी रखते हैं तो आप लोगों ने भी इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा या इवन किसी फ्रेंड के पास ये कार्ड ज़रूर देखा होगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि 2020 में ये कार्ड कैसा परफॉर्म करता है, इसकी स्पेक्स क्या हैं, इसके ब्रांड्स कौन कौन से ब्रांड्स इस कार्ड को सपोर्ट करते हैं, इसकी पावर कंजप्शन क्या है और एंड पे इसके गेमिंग बेंचमार्क क्या हैं। लेट्स रिव्यू दिस गेमिंग बीस्ट गरीबों के लिए you know and see how well this card performs in 2020 and more importantly is it worth it or not. So वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा and if you have not yet subscribed to the channel, please subscribe to the channel and click the bell icon for the latest updates. Thank you. Okay guys, now let's check the specs for GTX 1050. So what I like to do is I use this site called www.gamedebate.com, and it's a pretty trusted site, and I've been using this site for almost 6 years. And basically जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी मुझे कोई इश्यूज मैंने रिजॉल्व करने होते हैं या I want to check the benchmarks online or want to check the performance, I consult this site. So this card GTX 1050 is obviously the 2GB edition and it's 128-bit card with GDDR5 memory. और इसकी जो कोर स्पीड है वो 1354 है और बूस्ट क्लॉक 1455 है. And one thing I would like to tell you that whichever brand you're using, whether it's a zotac or asus or MSI, these speeds don't really vary that much, so performance is pretty much the same. As you can see here, the most important part of this card is its low power consumption. It only needs a 300-watt power supply unit. It only uses a 75 watts power, and which is the maximum power of this card. So basically what it means is you can even connect this card to your stock power supply. So you don't need a high-end or a fancy power supply unit for this card. तो अगर आप लोगों को कोई ऐसा कार्ड चाहिए जिसके लिए आप अपनी पावर सप्लाई को चेंज नहीं करना चाहते तो GTX 1050 is the best option. Its maximum resolution is 4K. It's a DirectX 12.1 with 5 and 4.5 OpenGL version. Its shared processing unit is 640, which is quite low compared to the RX 560 जो इसके rival है, लेकिन इसकी performance RX 560 से much better है. Okay, now let's go to the benchmark. As you can see, the GTX 1050 gets 17.2 FPS on control, and this benchmark is on ultra settings on 1080p resolution. Like, check this out guys, check out this card which is almost 5 years old is providing on ultra settings 1080p resolution 17.2 FPS on control, which is a very GPU hungry game. Similarly 17.5 FPS on Matrix Exodus, 19.4 FPS. Basically इसका मतलब ये है कि 17 FPS अगर अल्ट्रा में दे रहा है तो obviously मीडियम सेटिंग्स पे आपको वो 30 से 40 FPS ज़रूर देगा, तो which is much playable. Even in fact 40 FPS आपको अल्ट्रा पे Far Cry New Dawn पे दे रहा है. Like check this out guys, how amazing this is. So अगर आप लोगों को एक बजट कार्ड चाहिए अच्छा, तो यूजुअली होता यह है कि दो ऑप्शन होती हैं लोगों के पास इस रेंज में. अगर उनकी रेंज तकरीबन $130 है या $140 है तो उनकी रेंज में तकरीबन ये दो ऑप्शन होती हैं, या तो GTX 1050 और RX 560.
तो अभी तक जो हमने जिन गेम्स का टेस्ट किया है वो पुरानी गेम्स हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई लेटेस्ट गेम का टेस्ट नहीं किया। अब हम टेस्ट करेंगे कि ये कार्ड 2020 की गेम्स क्या चला पाता है या नहीं चला पाता। Let's test a pretty famous game called Horizon Zero Dawn and see if this card is up to the standard or not. So as you can see that the graphics are very ugly, and the reason for that is the game initially didn't want to start for this card. It gave an error screen saying that your minimum requirements are not up to the game, but when I tried to run the game anyway, it just adjusted the resolution to a very low scale. तो प्लेबल तो नहीं है ये, इसको प्लेबल तो नहीं कहेंगे क्योंकि एज यू कैन सी के इसकी जो स्टटरिंग है वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ प्रीटी मच अनप्लेबल। आई डोंट नो कि ये ऑप्टिमाइजेशन का इशू है, ये गेम क्योंकि अभी न्यू आई है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे थे ग्लिचेस में। देखिए लैगिंग एक अलग चीज़ है। देयर आर टू थिंग्स, वन थिंग इज लैगिंग एंड वन थिंग इज स्टटरिंग। The lag is basically due to the performance part. Like आपका ग्राफिक्स कार्ड अगर परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, आपका गेम लैग कर रही है, आपके FPS कम आ रहे हैं. But the stuttering is usually due to the issues of optimization or some glitches. So I hope that when the game is updated, ये glitches खत्म हो जाएंगे. So फिलहाल के लिए तो ये glitches बहुत ज़्यादा हैं और to be honest, the game is not playable at all. And as you can see that I'm using low settings, and I'm using the adjustment performance FPS of 30 FPS, but even still the game is pretty much unplayable. So that was from my side. Hope you guys enjoy the video, and if you have, please like the video and subscribe to the channel if you have not yet subscribed. Thank you.